If you have questions regarding the presentation, then yes, it will be uploaded on ICAP's website, and you can also email at SRC and we can provide that to you as well. And let's hear it from Mr. Fahad as well for this enlightening and informative session that he conducted. And the response of the audience says it all. But before we move towards our panel discussion, we have a little surprise for all of you. So, can we play the surprise? And I wonder what that could be. Miss Munisa, the only lady in the crowd, and all the gentlemen, people joining us over Zoom. This, as last year's incredible that we had the CSCL 2022. Now we're back again with the Chartered Accountants Cricket League 2023. The details will be emailed to most of you and all the members accordingly. And if you wish to join and play cricket with all of your fellow chartered accountants and present your teams and showcase all of them, you can do so. And the dates will also be announced to you as well. And with that said, now let's move on towards the panel discussion. We have an incredible panel. Two from our keynote speakers will also be joining in the panel. Of course, Mr. Riaz A. Rahman Chamdia and Mr. Fahad Yunus. And now, to moderate the session, please welcome partner of KPMG and an elected member of the Southern Region Committee, Ms. Munisa Usman. Please welcome with a huge round of applause. And then, of course, joining us all the way from the States, I would like to welcome Mr. Asad Abbas Khan. Now, for a small introduction of Mr. Asad Abbas, he is a strategic finance leader and finance business partner with excellent interpersonal skills who builds and maintains strong alliances while motivating teams and driving projects to successful completion. Mr. Asad, if you share your screen and join us as well. Mr. Asad, have you joined us? Perfect. Let's hear it from Mr. Asad with a round of applause. And last but not least, Mr. Danish Noorani. Mr. Danish is a seasoned management professional with over 20 years of experience in project management, compliance, risk management, budgeting and forecasting, audit, and training and development areas. Please welcome with a huge round of applause Mr. Danish Noorani. And as I mentioned before, Mr. Riaz Rahman Chamdia is welcoming again on stage as a panelist, and Mr. Fahad will also be joining us as a panelist. Let's hear it for the panel. Over to you, Ms. Munisa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Assalamu alaikum everybody, my SRC colleagues, Council Member Farooq Saab, and all our fraternity members who are joining us today live as well as online. So I think this is a very relevant topic which has been today discussed, because we keep hearing about the brain drain that is taking place, and a lot of people looking for opportunities to move abroad and for better economic opportunities. So I compliment Osama Rashid, my SRC colleague, for arranging this. If there could not have been more opportune a time for this to be discussed here today at ICAP. My panel has been introduced already by Babar. So without further ado, I think we can start with some certain questions, and then we can open the floor for discussions and make it more interactive actually. So Riaz, my first question would be directed to you. So for providing accounting services in USA and Canada, is it necessary to register a legal entity over there? Well, this has been responded by Fahad in his presentation as well, but I would like to reiterate and concur with the views given by Fahad that it is not legally necessary to form a legal entity over there to provide the outsourcing services. You can work as a sole proprietor over there, but incorporating a company over there will have its advantage. So it's better to do it, but it depends on various factors like at which scale you are operating, what are the regulatory requirements and the needs of the clients as well. So
it depends on the circumstances. Initially, you can go as a sole proprietor, and then as you go on and you have some more business, you can incorporate a legal entity. The legal entity will definitely boost the trust and confidence of the clients based in North America. So there is no doubt about it. Yes, thank you, Riaz. I think Fahad did cover this, but it's always better to have a fresh perspective from other people also, what they feel about the matter. So Asad, if you are there, my next question would be to you. So is there any need to create any hubs for acquiring businesses from North American market? Do you think that this would help, like if we create hubs for such market? If I was to summarize this, I would say definitely. But let me dissect this first. So let's define unique. Far talked very nicely. I think it was a splendid discussion on weekend establishment. But my stance is step ahead. We will take the global export services from Pakistan. That means we want to create our ancestral. Whether just to answer the previous question, yes, definitely go ahead and establish yourself in the North American market by creating it. But then we need to do that in conjunction and in tandem with the local government in Pakistan, which provide services and give us some state of the exports and all those lending and the tax benefits. So you define it first. If you look at the other hubs, Myanmar, China, India, even in the North American market, there are some hubs. However, they are government provided the subsidies well, and also they are quite some very big ones. So with the presence of the local partners, which is of course quite helpful in our case also, we've got partners in the North American market, and then from the government means the local people who are there, businessmen there, and that's how you're going to create jobs in there. Because if you start individually, it is possible but very, very difficult. So those hubs should be started in local companies. That's how India did it. HP management, there's a movement from 40,000 is not small. And as far as mentioned, there is still a lot of need. So yes, create those hubs but in a very structured way. So structured, as I said, we have some locations in Pakistan defined. We have a pool of students still again, the way the hubs are been done in India, especially in this, I feel that very successfully after this. You have one qualified personality below you, semi-qualified people, and then there are trainees. So in a team of 40, 30 to 40 staff, you have qualified plus semi-qualified people, and that's how you create a team that will be serving a very big market. Then within the hub, you should have specializations as also Riaz said. So you have specialization in public services, and again, regarding the previous point, if you are providing the short services, then definitely locally designated, it has its own price, but it has जहाँ पे भी इंश्योरेंस सर्विसेज कम होगी वहाँ पे हमको चाहिए एक नौकरी देखें चाहे पाकिस्तान में बैठे चाहे कनाडा yes definitely there is a need for passionate about creating those in a very structured fashion in Pakistan. I've seen that happening in 3 different countries. Actually I was part of regional hubs in different countries. Okay, so you're speaking from experience, I believe, yes, and I think that's very useful. It gives a practical insight into how it should be done. Fahad, I think the next question that I'll address to you, you did cover it in your presentation, but if it can be more directly answered, what are the minimum setup requirement for running such a business if somebody wants to venture into it? Last but not least, और मैं all मैं आपसे कहूँगा
कि आप लिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, प्राइवेट पर्पज से भी करें, वो भी बनाए गए, वहाँ पे भी बिजनेस हो रहा है, वो बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पे क्लाइंट खुद आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, क्लाइंट का फोकस वो बिल्कुल ऐसी ही जैसे आप मॉल में अपनी रिटेल शॉप है, तो अगर आप स्टैंड अलोन अपनी रिटेल शॉप खोलेंगे तो क्या होगा कि आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा, लेकिन आप जो है वो गवर्नमेंट मॉल के अंदर अपनी शॉप खोलिए तो आप लोगों को बुलाने का काम आप करिए। That's great. So, we've covered legal entities, we've covered hubs, and the minimum setup that is required. Now, whenever we talk about that, we also have some legal complications coming in. So, Danish, I would now address my questions to you. Are there going to be any confidentiality issues and, any legal challenges that would need to be handled? Thank you. Definitely, the confidentiality is यहाँ भी accounting है confidentiality is but we have talked from doing accounting services as a part-timer to a essential type big four. So it's an era of services. एक individual जो एक part-time काम कर रहा है versus big four काम कर रही है, बहुत सारे data confidentiality of course single आप इंडिविजुअली कर रहे हैं उसके लिए बट डिफरेंस कहाँ पे आता है उसको ये समझने की जैसे जैसे आपकी सर्विसेज बढ़ गई है या कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट आपके कस्टमर की तरफ से बढ़ रही है द मोर एंड मोर डेटा द कस्टमर शेयरिंग विथ यू द मोर एंड मोर कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस अब पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट के लिए ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है बिकॉज इफ यू वर्किंग विद द टीम द डेटा इज गोइंग टू मोर नंबर ऑफ पीपल देन जब आउटसोर्स होता है एक डेटा एंड अगर आप कह रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में से आउटसोर्स हो रहा है पाकिस्तान के अंदर डेटा तो ऑब्वियसली एक ओवरसीज डेटा जा रहा है देयर इज अंदर ट्रस्ट डेफिसिट कि जी ये डेटा कहाँ पे सेव होगा वो सर्वर्स कहाँ पर होंगे ठीक है डेटा यूएस में होगा पाकिस्तान में होगा ये सारी चीज़ें जो है वो एनालाइज करने की अदर प्रॉब्लम इज़ कि व्हेन यू आर सेलिंग इट्स सर्विस फ्रॉम पाकिस्तान obviously there is another challenge that comes in कि जी आपका इकोनॉमिक और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है या आपका जो आउटलुक है पाकिस्तान का वो किस तरह से ऑल दीज थिंग्स मैटर सो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स जो आपको कस्टमर विन करने के लिए ज़रूरी है द मोर एंड मोर एफर्ट यू कैन पुट इन एंड मेक श्योर योर डेटा's कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ देयर एंड क्लाइंट का डेटा जो है वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एटलीस्ट फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कि उसका डेटा जो है वो लीक होकर उसके कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाएगा बिकॉज यू आर ऑल्सो सर्विंग हिज कॉम्पिटिटर्स अगर आप किसी एक फॉर एग्जांपल एक किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप हो सकता है रेस्टोरेंट चेन्स को सर्व करते हैं तो एक रेस्टोरेंट चेन का डेटा हो सकता है दूसरे रेस्टोरेंट चेन के पास चल रहे हैं दोज ऑल दोज कॉन्फिडेंस इज़ रिक्वायर्ड कि जी आप किस तरह से उस ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे कस्टमर विन करने की एडिशनल प्रॉब्लम इसके अंदर यहाँ आज की सिनेरियो में एज एंड व्हेन साइबर अटैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं दैट्स एन एडिशनल प्रॉब्लम दैट यू नीड टू केटर और इसको देखते हुए आपको अपनी जो है वो एक डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी की पेज एक पॉलिसी एक तरीक़ेकार डेवलप करना है सो दैट यू कैन पुट इट ऑन टू द क्लाइंट्स टेबल सो दैट यू विन देयर ट्रस्ट एंड विन द बिजनेस एज वेल So, ये तो आपने बात की जैसे टू विन द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट बट आर देयर एनी लीगल रिक्वायरमेंट्स अबाउट दिस लीगल रिक्वायरमेंट्स में दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन देखिए लीगल रिक्वायरमेंट्स को अगर मैं डाइसेक्ट कर रहा हूँ तो दो तीन एरिया से बात कर सकते हैं एक तो ये कि जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स जैसे भी अपने ये क्वेश्चन किया कि जी मुझे कंपनी सेटअप करनी है या नहीं करनी कंपनी मैं सेटअप कर रहा हूँ ठीक है तो उसके जो है वो टैक्सेस रिलेटेड क्या मसाइल हैं अगर मैं वहाँ एम्प्लॉयज़ हायर कर रहा हूँ तो उसके पेरोल कंप्लाइंसेस क्या ये सारे वो लीगल मसाइल हैं जो स्टार्टअप फेस के हैं ठीक है फिर इसी तरह अगर मैं कंटिन्यूटी के अंदर जाता हूँ और ये साहब की वजह से आपने कहा कि जी डेटा वगैरह के हिसाब से तो डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रेगुलेशंस आ रही हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर इशू ये है कि चूँकि जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है रेगुलेशंस भी चेंज होती चली जा रही है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप ठीक है व्हेन यू आर डूइंग एज अ पार्ट टाइमर यू विल फोकस ऑन योर कोर एरिया बट एज एंड व्हेन यू ग्रो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंडस्केप ऑफ द लीगल लैंडस्केप ऑफ द रीजन यू आर वर्किंग इन तो कोई चैलेंज नहीं है लेकिन जैसे पाकिस्तान में अगर आप काम करेंगे यू नीड टू नो द लॉज यू नीड टू नो द राइट एरिया जहाँ पे आपने जाके काम करना है सिर्फ इसके अंदर चैलेंज ये आता है कि इफ़ यू ब्रीच अ लीगल एरिया इफ़ यू ब्रीच डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी तो वहाँ पर आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ग्रेव फेस करने पड़ सकते हैं
यू कैन बी सूड, जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी लीगल कॉस्ट आ सकती है। इवन इफ़ यू आर नॉट सूड, वहाँ पे इस टाइप के ब्यूरोज होते हैं, जैसे कनाडा में बेस्ट बिजनेस ब्यूरो के नाम से एक सर्विस है, वहाँ जाके क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं। When you get complaint, then that's get a bad reputation on your, so new clients win करना आपके लिए प्रॉब्लम होता है। So I would not say that's a challenge, but there is something, this is something that you should be very skeptical about। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, that's a part and parcel when you do business, ये सारी चीज़ें इसके साथ आती हैं। So you need to just learn those things and you need to be aware of the legal landscape in the region you're working at। Yes, I think that is something very important that you just stated. Knowing the legal landscape of the the entity or the area that you're going to enter into or venture into with your services. So the next question is more directed towards home, and I think nobody better than Riaz, being an ex-president of ICAP. Riaz, how can ICAP help, or what role can ICAP play in promoting exports of accounting services? Well, ICAP can play a pivotal role in promoting the export of accounting services in different ways. And the first and foremost is that they need to introduce a proper training or workshops, cater to the needs of the accountants who are not fully conversant with the US GAAP and UK GAAP. So I think they need to start a program where they should be certified on the application of these internationally recognized standards, as well alongside the IFRS, which they are quite familiar and very sound. Because sometimes the clients over there are asking that how good you are in understanding complex matters stated in the US GAAP. So when you enter into this market, you should have some training and then it's certification from the ICAP side. The other thing is that the ICAP should propagate favorable cross-border tax regimes as well. This will help also. And some sort of facilitation is required from the ICAP in terms of networking with the partners over there. So we can optimally use the chapters over there who can provide the platform from that forum to our practitioners over there who can go over there. They can organize and arrange seminars, invite the clients over there who are operating in this jurisdiction, where we can showcase and promote the Pakistani accountants. The other thing is that they can also disseminate insight into the industry. They can show, through their magazines, they can hire or engage the professionals who are in this field to give you an insight for the members who are interested. So these things can be done from ICAP. And I just came to know through our council member Farooq that a lot of work is being done at the ICAP level, and very soon in the next 3 to 6 months something will come up. They are engaged with the Ministry of Commerce as well. So let's see, inshallah, good times to come for those professional accountants and the firms who are interested to practice beyond the boundary. Very valid. I hope Farooq Naman sitting here from the council has taken note of that, and I think he would also address it in his speech when he comes to the dais. Okay, Asad, coming to you, do you think accounting qualification is a requirement for giving such services? Around 30 hours per week के reports आप लगाते हैं उसके ऊपर, that is around 25 to $30 high level, of course, there is no limit activity. Base level CFO secretary dollars, $300 per day, and of course, it was important funding, and we are sure about it costs X percentage of the certified. But then we need to do the start of the company. बाकी जितनी भी सर्विसेज इंग्लिश वायलेशन अच्छा ये अगर आज हम इसको अवॉइड करते हैं आज अभी आज की बात है जैसे कि मैंने समझा था कि ऐसे ऐसे स्लाइड का यही
कि डिस्ट्रैक्शन में ना जाए, नेगेटिविटी में ना जाए, जहाँ अगर आपने करना डिसाइड कर लिया तो बेस्ट है। तो मेरी रिस्पॉन्स है के अंदर फॉर नाउ thank you for your time and again pleasure and honor to speak at the platform and kudos to all the others, especially Saman and Babu. That's great. I think that widens the horizon and also broadens the scope of what people enter into it. Fahad, coming to you, what sales channels do you think these services can be sold through? Like, what sales channels can be utilized for sale of such services? Email at SRC and we can provide that to you as well. And let's hear from Mr. Fahad as well for this enlightening and informative session that we conducted. And the response of the audience says it all. But before we move towards our panel discussion, we have a little surprise for all of you. So, can we play the surprise? I wonder what that could be. Miss Louisa, the only lady in the crowd, and all the gentlemen, people joining us over Zoom. This, as last year's incredible that we had the CSCL 2022. Now we're back again with the Chartered Accountants Cricket League 2023. The details will be emailed to most of you and all the members accordingly. And if you wish to join and play cricket with all of your fellow Chartered Accountants and present your teams and showcase all of them, you can do so, and the dates will also be announced to you as well. And with that said, now let's move on towards the panel discussion. We have an incredible panel. Two from our keynote speakers will also be joining the panel. Of course, Mr. Great. I think you've mentioned LinkedIn also in Yunus. your And now, address. to moderate the And session, please as you welcome said very partner relevantly that AHG LinkedIn is like a and mall and you Executive already have a Director shop in the of mall, so you don't need to attract Please customers. welcome They already, the Mr. footfall is already there. So that's very relevant. Asad, you are And sitting of in course, the market, joining us all which the way people from are the trying to States, like I'd like approach to welcome and Mr. Asad Abbas attract Khan, people for a for small their introduction, services. Mr. Asad So, Abbas. when He we is a compare, strategic naturally when you finance come leader into an and international finance arena, you are business compared partner with with different excellent countries. interpersonal skills So, who builds and maintains strong alliances while perspective motivating teams actually and comes driving in that projects to successful Pakistan completion. and their Mr. accountants are Asad, lagging if you behind. could So share your why screen do you and join think us as is well. there this perspective that we are lagging behind in providing services as compared to other regional players? Mr. And Asad, how can you late join are we us? in establishing such a business opportunity? Perfect. Perfect. Let's hear from Mr. Asad with a round of applause. And last but not least, Mr. Danish Noorani. Now, Mr. Danish is a seasoned management professional with over 20 years of experience in project management, compliance, risk management, budgeting and forecasting, audit, and training and development areas. Please welcome with a huge round of applause, Mr. Danish Noorani. And as I mentioned before, Mr. Riaz Rahman Chandra is coming again on stage as a panelist, and Mr. Fahad will also be joining us as a panelist. Let's hear it for the panel. Over to you, Mr. Riaz. मुझे क्या मिलेगा मेरा क्या Assalamu alaikum everybody, my SRC colleagues, Council Member Farooq, and all our fraternity members who are joining us today live as well as online. So I think this is a very relevant topic which has been today discussed, because we keep hearing about the brain drain that is taking place and a lot of people looking for opportunities to move abroad and for better economic opportunities. So I compliment Saman Rashid, my SRC colleague, for arranging this. And if I could not have इसकी वजह से मेरे ख्याल से वी आर लैगिंग बिहाइंड ऑलवेज। मैंने कनाडा में भी काफ़ी एक आइडिया थ्रो करने की कोशिश किया, वाई डोंट वी वर्क टुगेदर। वो हर एक बंदा अपनी प्रैक्टिस लेके बैठा है, दे आर डूइंग गुड जॉब, $2-3 लाख की है वो, बट इफ दे सिनर्जाइज दे वुड बी मिलियंस। वो टॉप 10 फर्म में आ सकते हैं कनाडा में फॉर एग्जाम्पल, बट दे आर वर्किंग इंडिविजुअली। वो बात है, आई थिंक दैट्स द मेन रीजन। बाकी और बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं और वो आप कई चीज़ों को ब्लेम कर सकते हैं, बट लेट्स स्टॉप ब्लेमिंग द सिस्टम्स एंड द प्रोसेसेस, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। वो हम कर सकते हैं। लेट की बात हो रही है, इफ आई बी स्पेसिफिक, अकाउंटिंग सर्विसेज हम वी आर लेट एटलीस्ट 10 to 15 years। अच्छा, अब किया क्या जा सकता है? ऑफ कोर्स इफ आई एम टेलिंग द प्रॉब्लम आई नीड टू गिव अ सॉल्यूशन टू दैट। हम
जो मर्जी इंडस्ट्री ले लें, आई डोंट वांट टू एक्सपैंड ऑन दिस, जो मर्जी इंडस्ट्री ले लें, एयरलाइन, स्टील मिल्स, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, कई अकाउंटेंट्स ने खुद देखा है इधर जो ऑडिट करते हैं, वी डोंट इनोवेट, वी डोंट कीप अब्रेस्ट विद द चेंजेस एंड वी डोंट सी द चेंजेस कमिंग. हमने इन सारी इंडस्ट्रीज में इनोवेट नहीं किया. हम एयरलाइंस को सिखा रहे थे कभी बैठकर, कब हमारी भी एयरलाइंस को डूब रही है. टेलीफोन इंडस्ट्रीज हमारी टॉप नॉच होती थी, जब डिजिटल एनालॉग से डिजिटल पे आए उसके बाद हम फेल होना शुरू हो गए. तो हमने अब क्या करना है, अभी फाद ने रियासत ने बहुत अच्छी बात की, AI इनोवेशन जहाँ जहाँ हो रही है, लेट्स स्टार्ट टैपिंग इनटू इट. अभी से करेंगे, इनोवेट करेंगे और अब वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करें जो बहुत कम लोग प्रोवाइड हो रही है. बुक कीपिंग, काउंटिंग ठीक है, सैचुरेशन मैंने कम हो गई मगर कई हद तक हो गई है. बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने एक्वायर कर ली है, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, बिग 4 फर्म, ज़्यादातर नहीं बढ़ते बस. So you start giving a competitive edge to the world. So वो अगर स्टार्ट करें अब हम करना, तो स्काई का लिमिट हम वही बिलियंस में जा सकते हैं इकोनॉमी वाइज. और वही बात है कलेक्टिव थॉट. तो आई होप आई एम नॉट ओवर स्पोकन अबाउट दिस. No, that's very good, being upfront and straightforward, because I hope that will help us in like developing a collective thought and collective, responsibility as a nation. So, I can add something yes, sure, why we please are do. lagging behind Yes, that. yes. The first thing is that there is a very limited awareness amongst our accounting fraternity, the potential of this international market. Fahad has just shared the number, and it was shocking news for everybody sitting here, I think so. And as I said earlier, certain specified trainings and certifications are required to promote we are capable and competent to serve that market. So here we are lacking, and our competitors in the neighboring country are ahead of us. Lack of marketing and promoting Pakistan as a brand, Pakistani accountants as a brand, which is also lacking, and here we need the support from the embassies of the government of Pakistan sitting over there, their commercial attachis and business advisors as well. So here we are lacking too. And in Pakistan, there is a lack of IT structure and data security issues. These are also lacking. Those who are working as a freelancer at a very small level, they need to take care of it. In March, I think there was a power breakdown in Pakistan, and the American market and the customers, they can't believe it. Okay, we could not work for 8 to 10 hours, and suddenly that shatters their confidence. You cannot serve like that in this advanced global village. So you have to, as some of us said to you, that you probably further said, that you need to take care of that you have a backup of everything. If the electricity fails, there has to be a building generator or your office generator. There has to be UPS installed, and there has to be some other mode where you can secure the electricity at the point it goes down. And then you have multiple layers of internet connections, both shared and dedicated, just to confirm that there not be a single minute lag of providing the online or real-time services, and that we have managed. Alhamdulillah, at the BPO, because of all these infrastructure, not a single second at that time was missed by our customers who were sitting in the North American market. So if you grow, you have to Yes. take care of all this. Yeah, I think that's contingency planning, I think, which they really need to look into if they are going to venture into an international arena. Danish, what would your thoughts be regarding the quality, reliability and timely delivery of services, of our people compared to the neighboring countries? आई थिंक क्वालिटी रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन तो हुई था कि रियासत ने बताया कि टेक्निकली दी ICAP accountants or Pakistani accountants are very, very good. Let me dissect this quality area as well into two sides. एक हार्ड स्किल्स हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स हैं. हार्ड स्किल्स के अंदर भी वी कैन मेक अ गुड डिस्कशन कि जी एक कोर एरिया और एक सपोर्ट. तो कोर एरिया की तो डिस्कशन कर दी, IFRS, टेक्निकली वी आर वेरी साउंड.
बट जिस भी रीजन में आप जाते हैं उसका एक अपने लॉज एंड रेगुलेशंस है। हर जगह पे जो अकाउंटेंट्स काम करते हैं उनकी अपनी लिंगो है, लेकिन वो सॉफ्ट चीज़ें जो है वो आपको सीखनी ज़रूरी है। इफ़ यू गो टू नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, किस तरह से टैक्सेशन से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं और आप बात करेंगे टैक्स में आईआरएस पे फाइल करते हैं, तो बट उनका आईआरएस क्या है यू शुड नो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ के इलेक्ट्रिक का बिल, तो के इलेक्ट्रिक आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, ठीक है। इसी तरह वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये सारी चीज़ें आपको जो स्टार्ट करें उनको ये सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने की सीखने की ज़रूरत है। कोर्स है ऐसे इसके अंदर भी जो स्टार्टअप से बढ़ के यानी इंडिविजुअल से बढ़ के टीम जनरेट कर रहे हैं उनके अंदर भी एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का फंक्शन होना ज़रूरी है। पीपल कम एंड पीपल गो एंड पीपल आर द ट्रू एसेट्स इन द सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। उन लोगों को आपने ट्रेन करना है, बताना है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटी के एस्पेक्ट से हमें इंक्रीज़ करनी है अपने, बिकॉज आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज है दे हैव कलेक्टिव एक्सपीरियंस क्वाइट मोर देन योर्स, ठीक है। इंडिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, दे हैव स्टार्टेड मैनी ईयर्स बिफोर वी हैव डन। वो जो उनके पास कंबाइंड नॉलेज है, जैसे रियासत ने भी कहा कि शेयरिंग ऑफ नॉलेज और ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हैं। वी ऑल नीड टू लर्न ऑल दिस। देन कम्स द सॉफ्ट स्किल साइड, इसमें स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन है, बिकॉज योर क्लाइंट इज सिटिंग इन नॉर्थ अमेरिका, तो ओनली चैनल इज यूर स्पीकिंग टू देम, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर सबसे आपने जो है वो फ्लुएंसी उसके अंदर लेकर आनी है, नॉट ओनली इन स्पीकिंग बट ऑल्सो इन राइटिंग प्रपोजल्स और सबमिटिंग योर रिपोर्ट्स, और उनकी एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिलायबिलिटी और टाइमलीनेस के हवाले से इफ आई शेयर माई एक्सपीरियंस वर्किंग विद accountants of other regions as well, we are similar to them, but थोड़ा सा I think the nature of our accountants and our mindsets of accountants in Pakistan and the nature of people in other regions, उसका भी एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इंडिया की अगर आप मेंबरशिप देख रहे हो तो तकरीबन जो है वो 3.5-4 लाख की मेंबरशिप है अकाउंटेंट्स की, हमारी जो है वो 10-12 हज़ार है, तो वो भी एक बड़ा फ़र्क है उनके अंदर। दे आर मोर सबमिसिव टाइप नेचर ऑफ द पीपल, तो उसके हिसाब से जो है वो प्लीज़ बड़ा जल्दी कर लेते हैं अपने कस्टमर्स को। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सीखने की ज़रूरत है। हमारी गर्दन में सरिया है थोड़ा आई वुड नॉट से थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन ये कि ये वो चीज़ें हैं कि जो आप अपने जगह, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, आपने अपने कस्टमर को इस तरह से विन करना है, उसको मेंटेन भी करना है, तो मेंटेनिंग द कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रियाज साहब ने बताया, फाद ने बताया कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, यानी बिजनेस का बहुत बड़ा ऐसा बोला था जी, बस मेहनत करनी है और बस बिजनेस है, बट विनिंग बिजनेस से ज़्यादा मेंटेनिंग बिजनेस जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से रिलायबिलिटी, टाइमलेस फैक्टर, बैकअप्स, इंटरनेट, ये सारी चीज़ों को जो है वो काम करना बहुत ज़रूरी है। दैन मैं अगर नहीं कहूँगा जो स्टार्ट करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें सुनने के लिए बहुत स्कैरी है, जो है वो अपने क्लास लगता है, लेकिन इसके अगर आप बैठ के इसको प्लान कर लें सही तरीके से, या अपने पीयर्स के साथ जो पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ अगर आप डिस्कशन कर लें, दिस थिंग्स गेट्स वेरी ईजी, मच मोर डूएबल। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अगर थोड़ी सी मेहनत करें क्वालिटी और रिलायबिलिटी के अंदर, वी आर वेरी मच in the competition with anyone in the world. So I believe the tagline is know your customer basically. Absolutely. You need to have KYC about your customer. Okay, so we've talked about legal setup, the scope of services, the opportunities. Now let's come to the challenges. So Riaz, what challenges do you think are specific to this market, especially operating from Pakistan? And if you could also cover, because IT has become so prevalent in all our business transactions. As I already said, the IT infrastructure and security protocols need to be enhanced because this is very dear to the heart of the North American customers. I have already talked about the branding and promotion of Pakistani accountants and their capabilities. Third thing which came to my mind that it is a challenge for the SMP is the very high cost of licensed softwares, particularly for the SMPs. If you go for MS Office and then you have to put all the firewalls and antiviruses, these are costly affairs, and SMP may face a huge challenge in the wake of the depleting value of Pakistani rupee. It's huge for them. So this is a challenge for them. So therefore, to fix that,
I think what can a government can do in this respect for the startups at least, I think that needs to be pondered. The another thing is that we are facing acute shortage of accountants. We want to hire more, we have more work, but we can't find them in the market. Now, there are various factors behind that. The brain drain which is going on from Pakistani chartered accountants, ACCAs and SEWA, they are going abroad for their better prospects. So that's maybe one of the reasons. The another reason is we are not producing as much as accountant as the Indians are producing. So that's why they are 400 to 500,000 and we are just 11, 12,000. And out of 11, 12,000, 6 to 7,000 are abroad. So what do we have left to serve and cater to the North American huge market of $400-500 billion? So we need accountants. Here I am not propagating that we only employ, I am including all sort of accountant, whether we are SEMA or MBA finance or ACCAs. We have employed every accountants from all these institutes because we could not find 170 chartered accountants or even we can't afford to do that as well. So this is one of the issue. We are finding it very difficult to have the skilled and trained resources. The another dilemma of our market, there are thousands of service providers who are providing accounting services in Pakistan. Must be more than 1,000, but they are operating on a very small scale. They have not grown over the time. They are still working as a sole proprietor and employing only 3-4 people or 5-6 people, and that's their bread and butter, and they are happy with that. They need to consider to join hands with other partners, make a work as an institution, make an institution that will give a huge growth, which is a case with the BPO, and it's a trial and tested case. So these are the challenges we are facing. I guess where there is a will, there's a way. So I think these challenges can also, they can easily be surmounted. So it could not be so much difficulty for our accountants to, ace that. So we have a list of questions from our online participants. I think we reached more than 180 participants online, and there are certain questions that they have posed, and they are very patiently, I think, waiting for answers. So if I can now, address those. Mr. Asim Rashid, who joined us online, he has a question which says some clients ask for indemnity insurance cover against the services accountants perform. How can we overcome that? Because no company in Pakistan is providing indemnity insurance to foreign clients. So this is open to any of the panelists who would like to answer. So Canada there is something called errors and omissions. It's not that expensive. It's up to $1 million. I think you need to pay $25 to $30 for that. तो कोई भी प्रोफेशन जैसे मॉर्गेज एजेंट आपको बनना है, इंश्योरेंस का एजेंट बनना है, चलिए यार दैट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, यहाँ पे कई लोग बहुत आसानी से कुछ लाइसेंसेस ले सकते हैं. इफ़ यू आर रेजिडेंट स्पेसिफिकली तो आप वो लाइसेंस ले सकते हैं मॉर्गेज एजेंट का, आप ले सकते हैं इंश्योरेंस का लाइसेंस. It does not take a lot of time and effort and even money. वो अगर आप देखिए, अगर आप पास परमानेंट रेजिडेंस है इधर की कनाडा की, you can start providing those services even अगर आप दूसरे तरह से मार्केटिंग सही तरह से कर सकते हैं, so that will help you earn very quickly. वो errors and omissions E and O के नाम से कनाडा errors and omissions वो लाजमी है कई सर्विसेज प्रोवाइड करने. Okay, so Asim has another question. Oh, Fahd, yeah, you'd like to add? उसके लिए लोग आपको incorporate होता है. और wherever ये पाकिस्तानी कंपनी के अगर client के product tracking का मेरी सॉरी जस्ट टू ऐड, क्योंकि बड़ी कॉमन रिक्वायरमेंट है लाइबिलिटी इंश्योरेंस या इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेने की इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. तो जिसमें दोस्त ने सवाल किया कि दैट मीन्स कि आपका बिजनेस अभी इतना ग्रो कर रहा है कि दैट नाउ यू नीड अ प्रेजेंस इन योर मार्केट जहाँ आप इस्टेब्लिश करें कंपनी ये इंश्योरेंसेज लें, बिकॉज एंड द रीज़न बिहाइंड दिस कि जी वहाँ पे भी
उसका सोर्सेज सारी जाके ये मिलती है कि हाँ कोई लीगल ब्रीच या कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच आप करते हैं, सो दैट जो कस्टमर है उसके पास ये एक जो है वो रिकोर्स होता है कि वो आपको जो है वो कैचअप कर सकता है, और आपके पास भी जो है एक डिफेंस है कि जी अगर ऐसी कोई गलती हो गई तो ये ना हो कि आप लीगल सूट के चक्कर में आप जो है वो दिवालिया निकल जाए और आप बंद हो। तो दोज इंडेमनिटी इंश्योरेंसेज और लायबिलिटी इंश्योरेंसेज देन हेल्प्स यू टू कम आउट ऑफ दिस सच सिचुएशंस। So this is also an important, I think, requirement. So Asim Rashid has another question actually. He says North Americans have more automated systems than Pakistan. So there comes the technology gap. We are providing accounting services in a traditional way. They expect AI integrated apps to be used rather than MS Excel. So how do we face or cope with this dilemma? Asad, would you like to answer that? अच्छा ये एक मिथ है से सेट रही क्योंकि हम समझ रहे पता नहीं कौन सी तब टेक्नोलॉजी चल रही है, AI हो रहा है। जिन टोरंटो का कुछ एरिया है जहाँ पे some of the companies have this very automated sort of systems। अब जो वेस्ट में जाते हैं टोरंटो से, बिलीव यू मी, मैंने अपने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने कहा वेयर वी वर 25 years चेक सारा कुछ मैनुअल था, तो वो भूल जाएंगे। ये मिथ है कि दे आर वेरी ऑटोमेटेड। इवन ऑनेस्टली आई डोंट वांट टू शेयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो ग्लोबल कंपनीज मैंने कहा दे हैव एफपी एक्सेल्स, हालांकि बड़े बड़े ऐसे सिस्टम लगाए जो का फोरकास्टिंग सिस्टम, बजटिंग सिस्टम that is filed up on the basis of Excel project accounting। तो ये मिथ है कि वो बहुत बढ़िया है। think of like this तक लेवल जाएगा, but I read as a designated। If I add, Yeah, sorry, I totally agree with that. It's a myth, and we are very competent when it comes to the use of technology. even in the technology side, जो टूल्स आज के ज़माने में देयर इज़ नथिंग, कोई चीज़ सीक्रेट नहीं। जो टूल्स नॉर्थ अमेरिका के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आई एग्री कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ सारा कुछ ऑटोमेटेड है। खास तौर से जो फाद ने बात की कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को जब आप सर्व करने जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसी बहुत बड़ी खिलक आती है जो एक्सेल के ऊपर काम करती है। बट इवन वो टूल्स यूज़ भी कर रहे हैं, तो आज वो टूल्स आप भी कराची में बैठ के जो है वो बहुत आराम से सीख सकते हैं। कोर्सेरा का जिया फाद ने बताया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिसमें आप बड़ी आसानी से बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करके सीख सकते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि हमें अगर ये काम करना है तो हंगर फॉर लर्निंग इज़ अ रिक्वायरमेंट। आपने अपग्रेड करना है अपने आप को, नए टूल सीखने हैं, नई लैंग्वेजेस सीखनी है, नए रेगुलेशंस आते रहेंगे, लॉज आते रहेंगे, सारी चीज़ें होती रहेंगी। इफ़ यू हैव दी हंगर टू लर्न एंड सर्व तो ही आप बेहतर करेंगे, और इसी तरह आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो यू हैव टू हैव योर ओन यूएसपी। आप यूएसपी क्रिएट इसी तरह करेंगे जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें सीखेंगे और फिर उसको कस्टमर को ऑफर करेंगे। So that myth seems to be broken today. It seems to be busted. Yes, Asad, you want to add? हमें जो चीज़ सीखने की ज़रूरत है तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन मैंने बहुत अपने क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स की देखे हैं, तो मोमेंट स्टार्ट टॉकिंग तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो कनाडा में पता नहीं बहुत ही ज़्यादा इधर कम्युनिकेशन स्टाइल ही डिफरेंट है। यू विल नेवर सी द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट समबडी टॉकिंग नेगेटिव, इवन इफ यू आर सर्विस प्रोवाइडर। बहुत कम ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बिल्कुल आप पे ना उन पर नेगेटिव में बात करेंगे, वो आपको छोड़ देंगे मगर नेगेटिव बात नहीं करेंगे। मैं जॉब मार्केट में मैंने कितने एक्सपीरियंस अकाउंटेंट्स को ये कहते देखा, इवन फर्म्स का कि पता ही चला मैंने निकाल। तो देन आई स्टार्टेड आस्किंग देम दिस क्या कैन यू से दैट यू ट्राई टू डू दिस। तो देखा वो कम्युनिकेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग फाइनेंस के लिए नो मैच मगर ये कम्युनिकेशन हमारा बहुत ज़रूरी है। अनलेस यू आर ग्रूम्ड और ट्रेन्ड इन बिग फोर, जब खुद आप क्या कॉलेज का एक्सपीरियंस अच्छा था, हमारा कम्युनिकेशन जाया करता, दैट्स वन। दूसरा लीडरशिप स्किल है, जैसे हम मेंटियर लेवल पे रहते हैं ऊपर नहीं जा सकते मार्केट, उसका उनको हम बात ठहरा सकते हैं वो रेजिस्टेंस जो होती है। बट इफ वी हैव दैट लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल, आई हैव सीन दोस पीपल who had those skills getting up the ladder very well. Asad, you are For sitting business in the maybe market it is which very, people very, are very trying important. to like approach and try to propose the services. So, when we compare, naturally when you come with internationally, like you compare with different countries, so a specific perspective actually comes in that Pakistan and their accountants are lagging behind.
So why do you think is there this perspective that we are lagging behind providing services compared to other regions? And how late are we establishing such a business opportunity? वही अकाउंट्स करते हैं तो सारी दुनिया वही डेबिट I'll be very specific, excuse me, for the language selective thought as such में ज़्यादा नहीं है. I have lived in foreign countries. हमारे अंदर कुछ individualism है. Support structure हमारे neighbors का बहुत अच्छा है. I have lived in Saudi, Dubai, Canada. उनका support structure, the way they support each other is tremendous. मैं education industry में रहा. I saw them bringing in students 10,000 और हमारे एक्सपीरियंस होते थे 2-4 So एक collective thought जैसी होती है वो हमारे यहाँ लैग करती है. That has to be driven. But individual mindset है. मुझे क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, और मुझे क्या बनेगा. जब तक ये collective thought नहीं आएगी, we cannot progress करनी. आप discussion करनी जा सकते हैं. But then we have to develop that. सबसे पहले क्रिएट. जब हम डिजाइन समझ के आते हैं कि तो भी बड़ा स्पेशलाइजेशन क्रिएट करते हैं जब हाउ कैन इट गेट टू बी. So I think that definitely does bust the myth of technology being required for such execution. Asim, I hope you've got your answer. Then we have Ebrar Ali, who is talking about, saying it's a major difficulty in winning clients. Execution of the project is not difficult for a chartered accountant. Please elaborate what approach should be adopted to start winning clients practically, especially for those who are new to such services. And if I can club a few other questions also, because I think they also pertain to something similar. Mohammed Ayub is asking what is the route to enter into global markets online, and Tariq is asking how can we have a contact data like email addresses, WhatsApp contact numbers of clients so that we can contact them for business development, and secondly what sort of digital marketing platforms are beneficial in these countries. Like I think because you did cover it somewhat in your presentation, so few words. I don't want to expand on this. जो बड़ी इंडस्ट्री है, एयरलाइंस, emails, टेलीफोन इंडस्ट्रीज, कई कंपनियों को देखा है जब ऑडिट करते हैं. We don't know it, we don't keep abreast of the changes, and we don't see the changes coming. हमने इन सारी इंडस्ट्रीज में इनोवेट नहीं किया. हम एयरलाइंस को सिखा रहे थे कभी बैठ कर तब हमारी एयरलाइंस को टेलीफोन इंडस्ट्री हमारी टॉप नॉच होती थी. जब डिजिटल एनालॉग से डिजिटल पे आया उसके बाद हम तो हमने अब क्या करना है. अभी फाइनल में रियासत की बहुत अच्छी बात की एआई इनोवेशन जानना हो रही है. लेट्स स्टार्ट टैपिंग इनटू इट. अभी से करेंगे, इनोवेट करेंगे और आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करें जो बहुत कम लोग प्रोवाइड होती है. पर उसकी कंपनी ठीक है, सैचुरेशन मनी को होगी, 3 साल तक हो गई. बड़ी बड़ी कंपनी इन्होंने एक्वायर कर ली, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, बिग फोर और ज़्यादा. तो यू स्टार्ट गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एज टू द वर्ल्ड. तो वो अगर स्टार्ट करें कम करना तो स्काई में लगेगा. वही बिलियन पे आ सकते हैं इकोनॉमी और बड़ी बातें करेंगे. I hope I'm not. That's very good to be upfront and straightforward, because that will help us in developing a collective thought and collective responsibility as a nation. So I think that's something else why we are taking behind this. The first thing is that there is a very limited awareness amongst our accounting fraternity of the potential of this international branch for the research of the number, and it is shocking news for everybody setting up with these. And as I said earlier, certain specifying trainings and certifications are required to promote we are capable and competent to subject matter. Here we are taking the squad in our competitors in every country are ahead of us. Lack of marketing and promoting Pakistan as a brand. Pakistani accountants as a brand, which is also lacking, and here we need support from the embassies and the city where commercial authorities business advisors. So here we are taking two. And in Pakistan, I think that's a very useful suggestion, because that would just lead to even if he does not give you business, he would definitely recommend you to others. So I think that's a very useful suggestion. Yeah. those who are working with a freelancer at a very small level, they need to take care of it. In March, I think there was a power grid down in Pakistan. The American market, the customer, they can't pay.
could not work for 8 to 10 hours, and suddenly that shatters your confidence. You cannot serve like that in this advanced global village. So you have to, as someone said to you, that you probably further said, Very useful. take care of it, backup of everything. True, very true and very useful as in fact. Okay, so we have Abdul Rahman online who says that currently there has been a rapid brain drain from Pakistan, especially related to accountants. What is your stance in this respect and how does it affect the export of services from Pakistan? As would you like to take that up? It's already been responded. That's the challenge, and we need to produce more accountants. That's the only way. Especially the statistics also that you quoted. सिर्फ 1000 लोगों को पास कर देना यार. तो इसमें एक और चीज़ है, मैंने पिछले चंद सालों में देखी और मैंने काउंसिल मेंबर से भी बात की थी. We should stop battling with for हमारे के साथ कंपटीशन में आना. बेसिकली एक डिफरेंट बॉल गेम है. टिफा कुछ और कर रहे हैं. Why don't we collaborate with them to create some unity and qualification? हमारे के साथ एम्प्लॉइज कर देते हैं, की कंपटीशन आ जाता है. Rather than doing that, let's collaborate with them. काफ़ी लोग उधर जा रहे हैं, उसको भी बेसिकली एक रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटी होता है कि आज करके. तो उससे फिर यह है कि स्टूडेंट्स और भी आगे बड़ा स्ट्रीम या पोर्टफोलियो बहुत बढ़ जाए. I think we should concentrate on that part rather than saying ये वाला गलत करना है, ये वाला गलत करना है. इसे छोड़ दें. Let's collaborate with them. I would again. Great. So the next question is from Umar Ansari, and he's saying, do we require any local certification to provide professional services in USA and Canada? I think this was partly dealt with. And can I just club it with another question from Vakas, who says, can you specify some courses and where to enroll in those courses? Fahad, would you like to add to this? इसी तरह अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिकल बेस तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है, इसी तरह वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. कोर्स है इसके अंदर भी जो स्टार्टअप से बढ़ के इंडिविजुअल से बढ़ के जनरेट करने के अंदर भी एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट का फंक्शन इतना ज़रूरी है. पीपल आर द ट्रू एसेट्स इन द सर्विस इंडस्ट्री. उन लोगों को आपने ट्रेन करना चाहना है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटी के एस्पेक्ट्स में इंक्रीज करनी है अपनी, बिकॉज आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज है दे हैव कलेक्टिव एक्सपीरियंस क्वाइट मोर देन योर्स. इंडिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, दे स्टार्टेड मेनी इयर्स बिफोर वी आर. वो जो उनके पास माइंड नॉलेज है, जैसे कह सकते हैं जो शेयर ऑफ नॉलेज है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है. वी ऑल नीड टू लर्न ऑल दिस. Then comes the social side, इसमें specifically application. Your client is sitting in North America, only channel is you are speaking language barrier. आपने not only speaking but also writing proposals or submitting your reports or accuracy, ये सारी चीज़ें जो है वो possible. Reliability of happiness is always if I share my experience with it's similar to them, but इट ऑल्सो डिपेंड्स द फार्मर कि किस टाइप ऑफ सर्विस आप देना चाहते हैं. अकाउंटिंग सर्विसेज के अंदर भी अगर मैं लो हैंगिंग फ्रूट्स की बात करूँ कि आप फॉर एग्जांपल पेरोल सर्विसेज देना चाहते हैं, या आप टैक्स रिटर्न्स की सर्विसेज देना चाहते हैं, या HST GST वैट रिटर्न्स के देना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी जो है वो कोर्सेज मौजूद हैं. यानी अगर आप पेरोल सर्विस देना चाहते हैं, यू नो द पेरोल कंप्लाइंसेज, क्या क्या कंप्लाइंसेज करनी है, कौन सी चीज़ें किस तरह से डिडक्ट होंगी, इन सब चीज़ों के कोर्सेज अवेलेबल हैं. आई डोंट रिमेंबर द प्लेटफॉर्म बट आई कैन शेयर दैट प्लेटफॉर्म. इसी तरह टेक्स्ट सीखने के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद है. अगर आप कहीं भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये छोटी छोटी सर्विसेज अटैच होती हैं. ये तो वैट रिटर्न आपने देखना है, पेरोल उसका देखना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप जो है वो जितनी जल्दी की चीज़ें सीख लेंगे तो उससे दो बेनिफिट है. तो एक आपकी ऑफरिंग्स बढ़ जाएंगी, दूसरे एक आप सेम लिंगो बोलना शुरू कर देंगे. तो जो कंप्लाइंसेज
लॉसेज है, जो डिडक्शंस करते हैं, वो उसी वो में जब आप कस्टमर से बात करेंगे तो ही हैज़ द कॉन्फिडेंस कि ही नोज द एनवायरनमेंट, ही नोज द इंडस्ट्री, ही नोज ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स. सो वेरी Would you like to add, Rehan? Very little bit. They are absolutely right. There is no one course available for all sort of outsourcing services which I have shared with you. You have to structure yourself in the niche of the practice. But if somebody is expert in accounting and reporting and bookkeeping, so let it be the specific course for that. And then for that, there is no need to do any course other than the chartered accountant. But if you want to specialize in the IT field and you want to being an accountant, you also want to provide software implementation support services or penetration testing or IS audit, so then you have to be specific and go for those sort of courses. If you want to be a valuation expert, then you must go and learn what is being taught in the CFA to become a certified valuer. So you have to choose and pick, and where your inclination is, you go for that course. Yes, very true. You need to branch out into the field Yes. that you are targeting. So the next question is from Vakas, and he says, how do we learn the taxation requirement of the North American market? And Fahad Perez also has a similar question. He says, every client would be requiring tax services in bookkeeping. How can this requirement be catered to? नहीं, ऐसा नहीं है. It's not necessary that every client requires tax and accounting under one bundle. Again, ये वही बात है, self rejection वाली बात है. उसको नहीं करेंगे, इस तरह नहीं सोचते. आप सिर्फ accounting services देंगे, वो भी मिल जाएंगे. हाँ, taxation आपने सीखनी है, not a big issue. क्योंकि यहाँ पे almost all of the software, tax returns are driven through softwares. तो एक दो सॉफ्टवेयर के अंदर आप इन्वेस्ट कर लेंगे, वो भी कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट नहीं है उसकी. वो सॉफ्टवेयर ही बेसिकली आपको पूरा गाइड करेगा कि कैसे करना है. उसी में आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे, पूरे कोर्सेज उसके अंदर अवेलेबल है. जैसे कैन टैक्स है, यू फाइलिंग सिस्टम है, या एंड का टैक्स बुक्स है वो. और इसकी, एंड दिस इज़ नॉट लाइक प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन, ये तो ऑनलाइन आप जाएंगे, कैनेडियन टैक्स सॉफ्टवेयर, यूएस टैक्स सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं. यू कैन ऑफर दोज सर्विसेज. हाउएवर, अगर आप जैसे स्टार्टअप फेज में हैं, अभी इनिशियल फेजेस में, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो लो हैंगिंग फ्रूट है उसको टारगेट करें. अकाउंटिंग सर्विसेज को, जो आपका इजी टू डिलीवर, इजी टू सेटिस्फाई द कस्टमर, वो है, उसको करें. एंड मे बी टैक्सेशन को फॉर लेटर ऑन छोड़ दें, क्योंकि बाद में जाके आप उसको करेंगे. दैट वुड बी अ मोर प्रूडेंट अप्रोच. Would anybody else like to add to it? I think it's covered more or less, yeah. So amongst the list of questions from our male participants, finally we have a female asking a question online. It's Amna Saeed who says, can you please elaborate regarding internal audit services, as SMEs usually do not require such services. How can we target such internal audit services? Well, as Fahad stated, the size of the medium-sized company in US and Canada ranges around $50 to $100 million. And $50 to $100 million, when you convert in rupees, it turns into the billions of rupees, and that's the top 5 companies of Pakistan. So they do have the requirement to do the internal audit, where we can either provide the technically trained internal auditors as a resource, or we can take over the whole for the small or medium size, which has around 40 to 50 staff and 5 to 10 finance people. They also require the internal audit services. So where we can take over the internal audit work on ourselves, rather than they employ and set up a full-fledged internal audit department. So the requirement is there for medium-sized companies. We are not talking about the startups, where absolutely there is no need for any internal audit work, but who are in operation and have a decent revenue of $10 to $25 million, they would like to get your services as an internal auditor. Great. Amna Said, I hope that provides clarity to your question. Now coming to our physical participants, so I would like to open the floor for questions to them.
we've catered to our online participants, and now I think it's time that we ask the people who are here physically with us if they have any questions for the panelists. Is the very high cost of licensed software. Yes, I think that there's one over here. Do we have a mic for him? My name is Fahim. Thank you very much for holding this session. We have been trying to reach the market and the competitions which we are facing from Philippines, Vietnam, India, and the overall the language, the accent of the people, how Pakistani people speak English is also a good big challenge for us as well. And being remotely here when we are delivering to them, and kind of the time difference is also hurting us, these issues. So can you please elaborate how to fix this? I think that's targeted more towards soft skills, right? Anybody would like to So ask that? then simple is that you need to be part of the ICAP Toastmaster Club. That's a very good forum available from the ICAP platform. And otherwise, there are some short courses of 2 to 3 months available in the market where you can be a proficient in your communications. So you can go over there and learn. As one of the speaker or panelists said, that there has to be thirst. What do you want to achieve? To achieve that, you have to work hard and go for that. That's the simple solution. Yes. The Toastmasters, I think, is a great initiative actually, which our fraternity can make use of. एक एडवांटेज इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पाकिस्तान में ये है कि हमारा एक्सेंट है ना बड़ा न्यूट्रल है, उसका भी बड़ा एडवांटेज है। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो एक्सेंट बड़ा न्यूट्रल होने की वजह से आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है, बिकॉज कम्युनिकेशन जो है बड़ी फ्लुएंट हो जाती है। तो एक ये बड़ा एडवांटेज है। दूसरा क्वेश्चन टाइमिंग के हवाले से था, तो ऑब्वियसली दैट इज़, अगर आप नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में काम कर रहे हैं तो जो कस्टमर इज़ द किंग, कस्टमर के टाइमिंग को यू नीड टू कैटर फॉर। इसके अंदर मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाले हैं लोगों ने। ऐसी बात नहीं है कि सारे ही आउटसोर्सिंग जो है वो उन्हीं टाइमिंग में काम करती है। देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशंस विच वी अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैव मेड, but it depends which customer you are working for and which solution it works for. For example, there are certain service providers जिन्होंने इस तरह से जो है वो accounting services प्लान किया है कि there is 1/2 of overlapping working hours और बाकी टाइम जो है वो पाकिस्तानी टाइम के अंदर या लोकल टाइम के अंदर काम करते हैं, which it gives an advantage to the customer की जो accounting work है या उनका जो काम है वो 24 hours चल रहा है, so they can put the work for you and they get off the work, और जब वो सुबह वापस आते हैं तो उनका काम को मिल चुका होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द डे यू हैव डन इट एंड यू हैव प्लेस्ड वॉट एवर द चैनल इज, वहाँ पे आपने उनको रोक दिया। तो देयर आर डिफरेंट सॉल्यूशन, बट देन अगेन डिपेंड ऑन किस कस्टमर के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या सोल्यूशन उसके साथ जो है वो वर्कआउट। I agree. इसी तरह होता है। And in most of our clients, I've talked about the real-time basis, meaning that it depends on the client to client. Sometimes they only work on a real-time basis for 3 to 4 hours, and then some homework. You can say the homework is given to the guy at around 12 midnight. Then you go and sleep, and first thing wake up in the morning, do these jobs in your timing, and then when we come and join the office 5 or 6 of our evening and their morning, this work is there for them. So I agree, इस मॉडल पे भी काम चलता है। Great. So we are running short of time. If the questions can be very precise. Yes. My question is about tax laws. Is there any difference between the tax laws of Pakistani and American? And my other question is about the language. You know, I was serving to an American and I was saying that as per this law, he said, what is as per? It is old British English, you need to talk to me in American English. लॉज के अंदर ऑब्वियसली हर
कंट्री के अपने लॉज होते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। बट जो चीज़ समझने की वही है कि हर चीज़ की जो स्पिरिट है या जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है। इनपुट आउटपुट टेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास है तो वहाँ पे भी वैट के अंदर इनपुट आउटपुट टेस्ट द कॉन्सेप्ट्स आर सिमिलर। वंस यू नो योर लॉज तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और लर्न कि जी उस लैंड के ऊपर जो लॉ है वो किस तरह से वर्क करता है। जैसे आप बात दूसरी जो आपका क्वेश्चन है कि जी जो लैंग्वेज वाला है वो असद ने ये बात की कि कम्युनिकेशन इज़ द की। और मैंने ये कहा था कि हर जोग्राफिक रीजन की अपने तौर तरीके या अपने नॉर्म से बात करने के, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर अंग्रेज़ी में आप बात करते हैं तो आप पूछेंगे हाउ आर यू, साउथ अफ्रीका में जाके वो बोलेंगे हाउ इज़ इट। तो हाउ इज़ इट और हाउ आर यू, आप हाउ इज़ इट क्या होता है, ठीक है। बट उनका अपना तरीका है हाउ आर यू बोलने का। जैसे हाउ इज़ इट, तो वो चीज़ें आपको जो है वो सॉफ्ट साइड है वो सीखने की ज़रूरी है, सो दैट दे फील कंफर्टेबल कि जी यू आर अमंग अस, ठीक है, एंड यू आर नॉट एन एलियन। तो जब वंस वो फील करेंगे आप एलियन हैं तो भी वो हर चीज़ में आपको एलियन समझेंगे। जी आपको लॉ भी नहीं आता होगा, आपको टैक्स भी नहीं आता होगा, आपको पेरोल का भी नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें जो है उस पर मेहनत करने की ऑब्वियसली ज़रूरत है। एंड एज अ सेड कम्युनिकेशन Assimilation, I think, is very important in this aspect. So I think you had a question. Can we have the okay? अच्छा, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में कौन सी ज़्यादा फीजिबल है, यानी कि यूएस मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए या कनाडा? और रेगुलेटरी अगर फ्रेमवर्क को देखें तो कहाँ पे कम रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आप इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं? Asad, would you like to answer that? So there comes the technology gap. US market in terms of size काफ़ी बड़ी है। तो उस हिसाब से अगर आप क्वांटम देखें तो US market बड़ी है। लॉज रेगुलेशन दोनों के तकरीबन अच्छा ये सॉक्स भी अप्लाई होता है। I will also say right कि हम समझ रहे हैं more like टेक्नोलॉजी चल रही है फिर टोरंटो का कुछ एरिया है यूएस में भी बहुत इम्पोर्टेंट यूएस some of the companies यहाँ पे very outdated यूएस मार्केट अब जो वेस्ट पे जाते हैं टोरंटो से कैनेडियन थोड़े कंजर्वेटिव वैसे तो बड़े फर्स्ट ऑफ मैंने मगर जब योर लाइफ तो वो हो जाएगा। अब समझ ये बेट है दे आर वेरी ऑटोमेटिक थोड़े ओपन है। इवन ऑनेस्टली मैं नो अप्रिशिएट काफी कॉमन ग्लोबल कंपनी में अमेरिका थोड़ी का दे हैव सम दैट कॉन्सेप्ट्स जो हालांकि बड़े ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं, हालांकि दोनों का फोरकास्टिंग सिस्टम या बजटिंग सिस्टम दैट इज प्राइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल शीट एंड प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स। तो ये बेट है कि वो ये है आई थिंक कि जो से लेवल पे जो सोचो but no, that's not the case, honestly. I read that as also aspect. Great. So one last question now because we're running short of time. Very short response to the guy. Very crisp answer. For all the new entrants, my advice would be to tap the US market. It's more than 100 times than the Canadian market. They are quite familiar, their currency is strong, and they are very quick in decision making. As Asad said, Canadian market, these guys are very conservative. So it will be a waste of time and demotivating for the new starters. So you just concentrate and focus on US market. One last question because he's waited very patiently. My question is, we are focusing on freelancing and using Upwork, LinkedIn, and we have focused on tools like Top 10 or remote jobs or Crossroads. Can you please highlight how can we leverage them?
निकालनी है. So then I started asking them. Leveraging of services. Fahad, would you like to respond to that? हाँ, वो communication skill एक बहुत important है. हम core accounting finance के तो there is no match. मगर ये communication हमारा बहुत जरूरी है. Unless you are doing your trained in big four firms या खुद आपका कोई school या college experience अच्छा था, हमारा communication नहीं आता. That's one. दूसरा leadership skill है. जैसे आप mid year level पे रहते हैं, ऊपर नहीं जा सकते नमस्कार उसका उनको हम कसूरवार ठहरा सकते हैं कि वो रेसिस्ट हैं जो बनी है. But if you have that leadership and communication skill, I've seen those people who have those skills getting up the ladder very quickly. For business maybe it is very, very equally important. एक चीज और लेकिन एक चीज सवाल है सवाल मैनिफेस्ट करते हैं हमारे मेरा ये होता है वो प्रॉब्लम ये है सेल्फ रिजेक्शन बट अ जॉब नॉन कि क्लाइंट को तो ऑफर एक्सेप्ट हो जॉब और रिमोट जॉब्स है क्लाइंट को रिजेक्ट करते हैं एक्साइटिंग काम आप क्लाइंट के बिहाफ पे अपने आप को पहले से रिजेक्ट फॉर्च्यून 500 फॉर्च्यून तो ये एक माइंडसेट हमें सही करने की जरूरत है सब रिलेशन से हमारे साथ भी दोनों पीछे वो ये काम करते हैं तो सारे वही 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 सिस्टम however उसका जहाँ पर ऑपरेशन की बात है जैसे आपकी बात सही है एट पार है सर टू द एवरेज उसके आपको बहुत सारा रहेगा मैंने जैसे कि कंडीशन में कहा कि इसमें क्या है कि डेफिनेटली इट्स नॉट रियली फॉर द गाइडेंस के पाकिस्तान में ऐड कर सकते हैं उसके अंदर इंडियन स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि राजस्थान से अगर टोरंटो की मिसाल केस ट्रांसलेट करके उसका your Toronto की listed company being significant manufacturer multi-billion dollar revenue आज यहाँ पे आप देख लें ASC 600 यूज कर रहे हैं तो 10 के ज़माने का अपनी यूज कर रहे हैं अपनी भांजी को सजाने के लिए यहाँ पर आज इसको और लेकिन माउस नहीं चलता तो आप ये नहीं सोचते अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं ब्रांड से प्रोजेक्ट लेकिन आप खुद से ही समझ के बैठ रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा ये जो बहुत समझती है Great. So now that brings us to the end of the panel discussion. We've really overrun the time allocated to us, and I'd like to put on record our sincere appreciation and gratitude to our members joining us from abroad, online, and those who are here with us physically. It's not short of mentoring. You all are like mentors to all these people who are now considering these opportunities and have such different questions in their mind. So it's like, commendable how you have spared time out of your busy schedules to come and mentor us fraternity members. So with that, over to you, Babar, and thank you everybody. Thank you. And with that, I'd like to add one more point. This panel discussion went on for more than an hour. So yes, we did learn a lot and it was very wonderfully put. And now this brings us to the close, but wait. For the panelists and the moderator, we do have a token of appreciation. So first, I would like to call Mr. Riaz-e-Rahman Chamli on stage. And to present a memento to him, please welcome Chairman SRC, Mr. Osama Kapadia. अगर उसके थ्रू आप उनको कॉल भी कर सकते हैं मैसेजिंग भी कर सकते हैं लीगली आप लोग ईमेल भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्टार्ट करते हैं तो लिंक्डइन इज द बेस्ट Thank you, gentlemen. And next, for Mr. Danish Nurani, I would like to call Mr. Danish Nurani up on stage to receive his memento, and to give his memento to him, I would like to call Honorary Secretary of Southern Regional Committee, Sayyid Junaid Ali. Welcome both of them with a round of applause. And of course, every session needs a moderator, and for that, please welcome once again Ms. Muniza Osman Butt. And to present her the memento, please welcome Mr. Osama Rashid, also a member of the Southern Regional Committee. And now for the closing remarks, please welcome fellow member of the Institute of Chartered Accountants, Pakistan, and council member, Mr. Farooq Rahman, for the closing remarks. Please welcome him with a round of applause. क्या आप एक छोटा सा भी SaaS का रिपोर्टिंग डैशबोर्ड बना के उसको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज पे डाल सकते हैं? आपकी कंपनी
Riaz Rahman is here, SRC members here. मैं कुछ दिनों पहले भी यहाँ आया, कुछ करीब यही टाइम था और मैंने यही कहा कि बड़ी देर हो गई है तो आई हैव टू बी वेरी ब्रीफ और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आई विद लिमिट्स बहुत जल्दी इस पर बात कर लूँ। इस टॉपिक के ऊपर तो जितनी भी बातें हुई हैं आई थिंक उसके बाद कुछ ऐड करने के लिए रियली कुछ रह नहीं गया है, बट मैं मोर ऑफ पॉलिसी साइड से जो है वो आई बी काउंसिल मेंबर उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा बात करूँगा। मेरे अपने लिए आज ये आप सबकी तो CPD हो रही थी, साथ साथ मेरी भी बड़ी रिच CPD हो रही थी, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है वो मेरे बड़े हार्ट के क्लोज है और आई एम लीडिंग दिस इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट में। मैं जब ये कहता हूँ कि मेरी CPD हो रही थी तो जो एज ए इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर होते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो आप शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा कर रहे होते हैं और जिसका आपके स्किल सेट से कोई दूर तक का ताल्लुक़ नहीं होता है। सो मैं फर्स्ट जब काउंसिल टर्म में आया तो उस वक्त एक प्रेसिडेंट, बहुत सारे प्रोफेशनल काम तो मैंने किए, अपना कंट्रीब्यूट करता रहा, लेकिन एक उस सेशन में काउंसिल मीटिंग हो रही थी तो ऑल ऑफ ए सडन जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त उन्होंने कहा कि फ़ारूक व्हाई डोंट यू लीड करें और इंस्टीट्यूट की कॉर्पोरेट वीडियो बना दें। सो मतलब इन माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन मैंने कोई इंस्टीट्यूट की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट वीडियो, सो मैंने उसमें जाके जो एडवर्टाइज़र, जो फिल्म मेकर, प्रोडक्शन हाउस थे, उनके भी इंटरव्यूज़ किए, उनमें से सिलेक्शन की और फिर अगर आप लोगों ने वो कॉर्पोरेट वीडियो देखा हो तो माशाल्लाह उसके अंदर आई थिंक जितने भी हमारे लोग थे जिन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया, जो उसका थीम बना और वो फिर हमने साफ़ा की कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई थी तो उससे 5 मिनट पहले, यानी किक ऑफ से 5 मिनट पहले वो कंप्लीट करके और लाइव जो है वो वहाँ दिखाई और किसी ने उसको देखा हुआ नहीं था सिर्फ मेरे अलावा। तो वो एक मेरी अपनी एजुकेशन हुई। जो वो है कॉफ़ी टेबल बुक, वो भी मैंने लीड की हुई है। अब यकीन करें कोई मार्केटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा, लेकिन आई डन दैट एज़ वेल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आई कैन गो ऑन, बट जो पॉलिसी साइड से सीरियस जो बात है, ये एक नेशनल इंटरेस्ट में ये नेशनल कॉज है। BPO सर्विसेज के लिए जो भी इंडिविजुअल यहाँ काम कर रहा है वो ऑफ कोर्स उसके अपने फाइनेंशियल रीजंस, अपने प्रोफेशनल रीजंस तो अपनी जगह होंगे, बट एज एन इंस्टीट्यूट एंड देन एज ए कंट्री दैट इज़ वर्किंग टुवर्ड्स अ नेशनल कॉज, दैट वी सेट अप एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज और हम पाकिस्तान का नाम बनाए। मैं इस प्रोसेस में जब से हम इसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक ओपन के प्रेसिडेंट हैं। ओपन इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर। ये US के अंदर जिस तरह डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है अपना, इस तरह से ये ओपन है इन US। तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हमने प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट कमेटी के अंदर उनको इनवाइट किया और उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की और आई थिंक मेरे लिए वो बड़ा एक की मैसेज था कि उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड नीड्स टू नो दैट पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस। हाँ, द वर्ल्ड नीड्स टू नो दैट पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर बिजनेस। अभी वो ये नहीं जानते, उनको नहीं पता वाइडर वो उसमें कि पाकिस्तान भी ये इसमें प्रेजेंट करता है। बहुत सारी बातें हुई हैं, क्या मार्केट है, क्या सर्विसेज दी जा सकती हैं, वो सब देखें। आज का सेशन हो गया, मेरी बड़ी मैं ये कहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट कहें, आस्क कहें, एक्सपेक्टेशन कहें, वो SRC से ये होगी। एक तो ये कि कंग्रेचुलेशंस जिसने भी कंसीव किया, ये हमें
सेशंस, एक नहीं और बहुत सारे भी करने हैं. वील फर्दर कोलैबोरेट ऑन दैट कि हम कैसे इसको लेके चलेंगे. मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने एक वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर फ्रेड 3 पाकिस्तान में की थी. फ्रेड 3, रियाज यू वर प्रेसिडेंट एट दैट टाइम. जब हमने वो फ्रेड 3 कर ली, वो कॉन्फ्रेंस होती है, बेतहाशा हमने कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं जो कि अच्छी से अच्छी हो रही होती है. बट देयर आस्क वाज दैट पोस्ट द कॉन्फ्रेंस यू नीड टू प्रोड्यूस अ पब्लिकेशन. उस पूरे कॉन्फ्रेंस के अंदर जो डिस्कोर्स हुआ, जो डिस्कशन हुआ, जो हुआ, उसको आप समराइज़ करें और वो प्रोफेशनली समराइज़ करना है. ठीक है. जब हमने उसको सायरा शमसी उस वक्त मुझे हेल्प कर रही थी, तो हमने जब उसको वो बनाया, फर्स्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस एज वेल कि जी इस तरह का एक बनाना है, तो मैंने जब उसको रीड किया रिव्यू, और मेरे रिव्यू करने के बाद हमने वर्ल्ड बैंक में दिया कि ये हमने पूरा बना लिया, आप देख लें. उन्होंने रिजेक्ट कर दी और यार नो दिस इज़ नॉट प्रोफेशनली डन. सो उन्होंने कहा, एक हमें आइडेंटिफाई किया, हम उस इस्लामाबाद बेस्ड एक फ़ीमेल थी, उनको स्पेसिफिकली हायर किया, 6 लाख रुपए दिए उसको, 6 लाख रुपए, इमेजिन. हाँ, उसको हमने उस रिपोर्ट को उस पूरे उसको ठीक करने, और फिर वो जाके प्रोफेशनली रिपोर्ट बनी, पब्लिश हुई, अराउंड द वर्ल्ड गई वो. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि उस फ्रेड 3 की रिपोर्ट को देखें. और आज जितनी विजडम रियाज रहमान, दानिश, असद अब्बास, फहद, फैंटास्टिक डिस्कशन, क्या आइडियाज़ दिए हैं, क्या बातें की हैं, व्हाट अ विजडम. इसको जाने ना दें, ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा. और मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूँ ऐसे एज एन SRC आपको, कि आप इसमें देखिए, कॉस्ट तो कोई भी नहीं है ना, एवरीथिंग हैज़ बीन डन, इट्स ऑल रिकॉर्डेड. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि प्रोफेशनली डन पब्लिकेशन करें. हाँ, एज एन SRC पब्लिकेशन, दैट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर यू. कल को यहाँ से बहुत सारे लोग जाके भूल जाएंगे रियाज रहमान ने क्या कहा था, दानिश नूरानी ने क्या बात की थी, असद अब्बास, फहद. सो उसको कैप्चर करें, कम अप विद अ पब्लिकेशन. हाँ, ये रह जाएगी, ये तारीख में, यू नो, इट विल बी ए इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा. ऑल ऑफ यू आने वाले यंग जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, एंड दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट. तो दैट इज़ वन आस्क. इंस्टीट्यूट के हवाले से रियाज रहमान ने भी बात की कि जी दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू. सो 3 बड़े उसके अंदर मैं कह के और फिर मैं कंक्लूड करूँगा. 3 चीज़ें. इंस्टीट्यूट कैन ब्रिंग क्रेडिबिलिटी टू आवर मेंबर्स, टू आवर फर्म्स. हाँ, एक काम हम क्या कर सकते हैं कि हम क्रेडिबिलिटी ला सकते हैं. कैसे ला सकते हैं? सो वन ऑफ द आइडिया इज़, जिसको फिर हम आगे इसको लेकर चलेंगे, थोड़ी कंसल्टेशन वगैरह आपस में करके फाइनली काउंसिल से अप्रूव कराएंगे. सो द क्रेडिबिलिटी कैन ब्रिंग वेयर वी ऑन आवर वेबसाइट हैव अ लिस्ट ऑफ फर्म्स, दोज हु हैव प्रैक्टिसिंग लाइसेंस, दैट दीज आर द पीपल हु प्रोवाइड BPO services, and there can be a link to their website. Rest go to their website. ठीक है. सो जो वो प्रोफेशनल फर्म है उसको कि जी ये वो लोग हैं जो BPO देते हैं, और उनकी फिर वो जो भी सर्विस है, somebody may be giving bookkeeping services, somebody may give valuation or whatever. So वो उसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना. It is not the job of the institute to provide the service, but to can give the credibility to that कि जी ये लोग हैं. ठीक है. सेकेंड, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन करनी होगी इंस्टीट्यूट को, और वो हम कर रहे हैं. कोऑर्डिनेशन, व्हाट इट कॉन्स्टिट्यूट, व्हाट इट एम्पास, कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट, कोऑर्डिनेशन गोइंग इनटू द इंटरनेशनल मार्केट, मेक द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स. मैं यहाँ बैठा हुआ और मैं आई वॉज बीइंग स्केयर्ड के इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग की भी बातें हो रही हैं, सॉलिसिट ऑफ बिजनेस की भी बातें हो रही हैं. मैंने कान बंद कर लिए, मैंने कोई नहीं सुना ऐसी कोई बात कि सो मार्केटिंग और सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मसले हैं. तो इसको भी हमने कैसे टैकल करना है, दैट इज़ वेयर अ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एक मेंबर अपनी मार्केटिंग और सॉलिसिटिंग नहीं कर सकता, बट इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म में ये इसकी गुंजाइश की जा सकती है.
ठीक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जब ट्रेनिंग फेयर्स होते हैं ट्रेनीज़ के लिए, इंडक्शन के लिए, तो वहाँ आके आप स्टॉल भी लगा सकते हैं, वहाँ अपनी बात भी कर सकते हैं, फर्म्स आती हैं। सो काइंड ऑफ सच अरेंजमेंट वेयर वी कैन गो इंटरनेशनली, और उसके अंदर फिर ये फैसिलिटेटिंग या इसका कोऑर्डिनेटिंग रोल जो है वो हम कर सकते हैं। वी कैन गो एंड टॉक टू द मिनिस्ट्री। आज आयशा मखदूम आई थी, इनके साथ मेरी मीटिंग भी हो चुकी हुई है। वी हैव रिटन लेटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एज वेल, एंड यू कुड सी के पर्पस यही था कि उन्होंने ऑफ़र किया, उन्होंने कहा कि हर किस्म की वो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। एक इंडिविजुअल मेंबर फर्म नहीं जा सकती है, दिस इज एन इंस्टीट्यूट कैन प्ले दैट रोल, एंड वी आर प्लेइंग दैट रोल। वी हैव एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स, और हम दुनिया के किसी भी एम्बेसी में जाकर उनके साथ लिंकअप कर सकते हैं। हमने आज यूएस को मिनिस्ट्री में भी हमने वहाँ एम्बेसी में भी बात की थी। वहाँ वी वांटेड टू हैव द ट्रेड मिनिस्टर आल्सो स्पीकिंग हियर, जो वहाँ है, बट उनका आज लास्ट वर्किंग डे था, जो वो रिप्लेस हो चुके हुए हैं। सो वी कुड नॉट ब्रिंग हिम हियर एज वेल। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि दिस इज़ द रोल दैट अगेन इंस्टीट्यूट कैन प्ले, एंड वी विल बी फर्मिंग अप। द लास्ट थिंग ऑन द इंस्टीट्यूट रोड वुड बी कि जो बहुत सारी यह बातें हुई हैं कि जी ये वाला कोर्स करा दें, सॉफ्ट स्किल का कराएं, लैंग्वेज का कराएं, वहाँ की मार्केट के हवाले से और कोई टैक्सेशन का कराएं, रियाज रहमान ने कहा कि यूएस गैप का कराएं। और सो ये वो रोल है जिसको के ऊपर हम फर्दर कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन वी सिटिंग एट द इंस्टीट्यूट, व्हेन वी मेक आवर पॉलिसी, अब हम स्पेसिफिकली सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के लिए नहीं बना रहे हैं। हाँ, वी विल बी मेकिंग दिस पॉलिसी कि हमने तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना है, कोई भी मार्केट है। मेरे हिसाब से मिडिल ईस्ट बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। अदर डे अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा हो तो हम लोग मलेशिया के डेलीगेशन से मिले हैं। इमेजिन वहाँ के, आप समझ लें कि वहाँ का चैम्बर के किस्म का जो फोरम था, उससे हम मिल रहे हैं। हमारा क्या काम है, लेकिन द अंडरलाइंग वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मीटिंग देम वॉज कि जी हम उनके मुझे मालूम है कि वहाँ अकाउंटेंट्स की शॉर्टेज है। आप अगर जाके देखेंगे, पढ़ेंगे, मलेशियन मार्केट के अंदर अकाउंटेंट्स की शॉर्टेज है। सो आपने उधर भी बातचीत करनी है, सुनना है, देखना है कि इज़ देयर एन अपॉर्चुनिटी और नॉट। सो दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेटिंग वर्क दैट वी एट द इंस्टीट्यूट पॉलिसी हम पूरे दुनिया में अपना करेंगे। ये जो थोड़ी बात हुई थी कि इंडिया बहुत आगे है, वो बिल्कुल आगे है। पाकिस्तान में ये क्योंकि कोविड के बाद ये जूम और ये वो सारे जो है ना, वो मच मोर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आई है और हम भी ट्यून्ड हो गए हुए हैं। सो आई थिंक अब थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर इजीली हम ज़्यादा एडजस्ट हो सकेंगे। सो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। हमने एक उनके वी आर वर्किंग वेरी स्ट्रक्चरली, कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे उनके ये नई चीज़ है ना, मेरे लिए भी नई चीज़ है। अगर मेरे साथ कुछ लोग कोलीग्स भी काम कर रहे हैं, उनके लिए नई चीज़ है, तो वी वुड लुक टूवर्ड्स यू पीपल। आज मैं इस फ्लोर से आई एम ऑफरिंग, बल्कि मैं आप लोगों से डायरेक्ट अलग से भी बात करूँगा ऑफलाइन के रियाज, आप, दानिश, असद, फहद, और अगर कोई और है तो एक मैं अपनी प्रैक्टिसिंग मैनेजमेंट कमेटी का एडवाइजरी ग्रुप बना लेते हैं फॉर एक्सपोर्ट सर्विसेज। तो आप हमें एडवाइस करें कि इंस्टीट्यूट ये टेंजिबल स्टेप कर सके, ठीक है ना। ये कॉन्फ्रेंसेस, ये डिस्कशन तो होगा, बट वी नीड टेंजिबल स्टेप्स ऑन ग्राउंड वेयर वी कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए रियली आई लुक टूवर्ड्स द एक्सपर्ट्स। रियाज आप इसमें डे इन डे आउट कर रहे हैं, दानिश आप, फहद आई थिंक एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज है उनकी, मच अप्रिशिएटेड। सो आई वुड रिक्वेस्ट फहद, अगर वो ऑनलाइन है इस वक्त, असद अब्बास, और अगर आपको कोई और मालूम है तो उनका भी बताएं। आई विल फॉर्म एडवाइजरी ग्रुप कह लेंगे या एडवाइजरी कमेटी कह लें, जो कि हमें एडवाइस करे टेंजिबली। वी डोंट नीड कि आप आएँ और घंटों के घंटों कोई मीटिंग कर रहे हो, बट एक कलेक्टिव सा फोरम बन जाए, कोई हम ग्रुप बना लेंगे, ईमेल्स जा रही हैं, आप हमें गाइड करें, बताएं, सो दैट वी कैन टेक tangible steps. So that is another one of my request. So आप लोगों की तरफ इतनी ही है कि और भी किसी के पास सजेशन कोई भी चीज़ हो, send to the institute, and इंशाल्लाह we have थोड़ा इंस्टीट्यूट में रिसोर्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। जब हमने इसको स्टार्ट किया तो जो रिसोर्स था बड़ा कमिटेड था और वो हो रहा था, हम आगे बढ़ रहे थे, एंड देन वन फाइन डे ही लेफ्ट, सब रुक गया। अब दोबारा बिल्ड किया है
आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी, बल्कि मैं एक सेपरेटली डिस्कशन करूँगा US में, अगर फ़हद या रियाज आप भी बताएं, कि मुझे एक एडवाइस आई है कि वहाँ कोई हमें अपनी इंस्टीट्यूट की फ़िज़िकल प्रेजेंस चाहिए है वहाँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इंस्टीट्यूट थोड़े दिन जाए कोई किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में और फिर विड्रॉ हो जाए। कंसिस्टेंटली वहाँ रहने के लिए तो इस प्रेजेंस को कैसे कर सकते हैं मिनिमल कॉस्ट के अंदर, अगर मैं ऑफलाइन भी इस पर कनेक्ट करूँगा कि किस तरह से, तो इवन टू दैट एक्सटेंट वी आर रेडी टू गो। कौंसिल में इसको प्रेजेंट हो चुका हुआ है, फुल सपोर्ट फ्रॉम द कौंसिल है कि इस चीज़ को जो है वो हम आगे लेकर चलें। सो इंशाल्लाह वी विल बी वर्किंग टुवर्ड्स दैट। थैंक यू। Thank you, Mr. Farooq Rahman, and I would like to once again call you up on stage, Mr. Farooq, because we do have a token of appreciation. And to present that, please welcome once again Ms. Muniza Osman Butt to present it with a huge round of applause. And now let us bring this event to a close. But to bring this event to a close, I would like to call Mr. Osama Kapadi, Chairman SRC, to give the vote of thanks and bring this event to a close. Thank you. Let's welcome him. Thank you, Baba. I would like to thank Farooq Saab for his thoughts and ideas. We'll definitely take a note, and obviously all our panelists, Riyaz Saab, Danish, Fahad and Abbas, I think they shared some very relevant thoughts and experience. I'm part of that working group within the firm as well, where we were looking at export of services. So I think the time is right now is right. I think we have a very small footprint in the global scenario, and when we compare ourselves to the neighbors, but or beyond. But I think the opportunity is right. Even though we have some impediments like political stability, the country's image, but these are not showstoppers. So I think if people venture out to find work, they will be able to find work. I think the real challenges, which I think Danish also touched upon, is to sustain and grow. And that, I believe, is a bigger challenge, because when you start working with certain, with your clients, they're really looking for quality, the experience they get, and the relationships, and that's where the leadership actually comes into place. How you develop relationships, and I think for that, जो मुझे लगता है सबसे important चीज़ है, yes, when you look at these services, the margins are healthy. Obviously you get some sort of a hedge from when you're earning in foreign exchange as well. But really, it's really important to take a chunk out of it and invest in your people, experience, culture. I think that's equally important as to how you will be able to retain and attract and retain that good talent. Because as Yasab also mentioned, the brain drain is there, but from our experience, if you reward your people, you provide the right sort of infrastructure, environment, you'll be able to retain them. You'll always find people you'll be able to retain. Pipeline again is a challenge. So yes, we will need to generate more accountants, or wider your pool. And that's something that the institute can look into, and I'm sure that Farooq Saab mentioned that the council is also looking into that. At SRC, I would also like to thank Osama Rashid and for conceiving this idea to hold this event. He was working on it for quite some time, trying to gather people. So, and Muniza obviously for driving the conversation. So thank you very much for that, and obviously the SRC team. So we'll be holding some more events, and we're working closely with Farooq Saab and the council on this. So thank you very much. I think we've overrun, but I think believe the dinner is ready. So yeah, thank you.